I don't take note of delay at all. We have to work in tandem and togetherness, in attitude of cooperation, and I seek guidance of very senior members. One of them has spoken a while ago. Matters of urgent public importance. Shri V. Vijay Reddy. Thank you, Chairman, sir. Chairman, sir, it is very important issue which I would like menace that is caused by the instant loan apps, sir. Sir, the modus operandi is to give instant loans. In fact, I also have been receiving so many messages very often that I have been sanctioned the loan of 2 lakhs, 5 lakhs, etc., etc. And through these mobile applications and in the process, they gain access because they ask for the access to our data. They ask for the access to our data, whether sensitive messages, gallery, and then photos, videos, whatnot, everything from our mobile applications, sir. And the cycle of blackmailing and the extortion starts there, sir. Once they gain access to our mobile data, and if the borrower is forced to, in fact, what happens, sir? After the loan is availed and the amount is credited to our bank account and the repayment starts, where if the borrower fails to repay the amount or installment is not repaid promptly, then the borrower is forced to repay an amount is much higher than the loan amount, and which is very exorbitant, sir. If the borrower resists, what happens? He is threatened with dire consequences, with leaking of sensitive and personal information of the borrower. Sir, in fact, majority of the instant loan apps are being operated from China. It is not from India. And after all, the cases that are being booked on Indian citizens who are agents of these loan apps, sir, being operated from China. Sir, these loan apps engaged in finance business. It is nothing but lending the money. Any finance company engaged in the business of financing has to be registered with the Reserve Bank of India as an NBFC, which is not happening. So I want this to be taken note of by the Honorable Leader of the House, sir. Andhra Pradesh has witnessed so many cases of extortion and also blackmail to do the best of to address this issue, and so many cases have been registered, and then some of the persons have been arrested, and AP Police worked Central Computer Emergency Response Team, sir. And sir, finally my request is, I request the Honorable Minister to intervene and ban such apps. Number 2, punish the developers and promoters. Number 3, formulate stricter laws and regulations around the privacy of phone data, sir. Thank you very much, sir. Dr. V. Sivadasan. Respected Chair, here to my question, the government has replied that related to the vacancies of the jobs. Unemployment is a very serious crisis in our country. Sir, it is a shocking around that 10 lakh posts are vacant in the ministries of the government departments itself. But in the last 5 years, only less than 2 lakh posts have been filled by the government. Sir, this is a shocking incident. That means less than 40,000 appointments per year. This is very less number of recruitment. Earlier, this government has replied to my question that the vacancies in railway is 2,26,000. Sir, in army, the government has replied 1,31,000 posts are vacant, and the huge number of vacancies in other posts also reported. Sir, in this recent reply of my question, the union government stated that in 23,000 posts are in vacancies in Group A category. Sir,
118,000 posters vacancies in Group B category, and 8 lakh posters is vacant in C category, sir. 8 lakh posters are vacant in Group C category. See the huge number of vacancies in the government sector. Sir, the youngsters in the country is facing huge problems, various problems because of the unemployment. In IT sector, we are seeing a new crisis. The IT companies are reducing the salaries, and the terminations of employees reported in the various IT companies. Sir, the government of the country, they look in the matter very seriously, and I request the government fill up all vacancies as soon as possible. Otherwise, the youngsters in the country face huge other problems. So, thank you, sir. Thank you. Shri Pavitra Margarita. हेलो, नमस्कार सर। सभापति महोदय, बचपन से ही मेरा सार्वजनिक भाषण देने का थोड़ा बहुत आदत है, लेकिन पहली बार मैं जीवन में हिंदी में भाषण देने के लिए कोशिश कर रहा हूं, और मेरा मानना है कि मेरा मातृभाषा असमिया हो या अन्य भारतीय भाषा हो, इसी तरह हिंदी विश्व का एक अन्यतम श्रेष्ठ भाषा है। सो माननीय सभापति महोदय, आपका जरिए मैं सदन को ये बोलना चाहता हूँ बेहद खुशी से कि अगली साल 2023 में ही अपना असम चाय का 200 वर्ष पूरा होगी। वी आर कंप्लीटिंग 200 इयर्स, 200 वर्ष पूरा होगा, और असमवासी तथा असम का सरकार डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में ये जो 200 साल का ये उत्सव हम मनाएंगे। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार भी असम को सहायता करे कि भारत सहित विश्व का अन्य प्रांत में भी ये माना जाए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। और दूसरे मेरा बात यह है कि चाय को नेशनल ड्रिंक हिसाब से घोषणा किया जाए, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से उत्तर पूर्वी तक हर घर की रसोई में, माँ का रसोई में एक चीज मिलता है, व्यवहार सर्विस रूज होता है, वो है चाय। और हम सब लोग, देश भर की हर नागरिक सुबह शुरू करते हैं हम एक कप चाय से। चाय अपना भारत का, अपना संस्कृति का अभिन्न अंग है। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू डिक्लेयर टी एज अ नेशनल ड्रिंक और बेवरेज। एंड थर्डली, आई थिंक अब देखा जा रहा है कि चाय का नाम पे आजकल दूसरा चीजों की भी बाजार में बेचा जा रहा है, जैसे अपराजिता फूल। अपराजिता फूल ठीक है, सही है, लेकिन अपराजिता फूलों को, जो रस को हम ब्लू टी के नाम पे बाजार में अब बेचा जा रहा है, लेकिन इट्स नॉट टी। टी हैज अ सेपरेट साइंटिफिक नेम एंड अपराजिता फूल हैज सेपरेट साइंटिफिक नेम। सो चाय तो चाय होता है। सो ये मिलावट, दूसरा नाम पे सेल करना एन अनएथिकल प्रैक्टिस है। सो मैं ये निवेदन करता हूं कि ये मिलावट को भी देखा जाए। थर्ड, हर चाय का हर पत्ती के पीछे चाय श्रमिकों का श्रम और त्याग होता है। असम में लगभग 50 लाख से अधिक चाय का श्रमिक है, उन लोग का त्याग है। ब्रिटिश राज का 100 साल और बाद में कांग्रेस राज का 70 साल में बहुत हम लोग खो चुके हैं। मेरा निवेदन है कि चाय बागान के श्रमिकों के लिए भी कुछ एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ माय चाय श्रमिक, क्योंकि स्वतंत्रता में भी अपना चाय बागान का प्राणाहुति हुआ था, और ओवरऑल डेवलपमेंट का चाय बागान का बहुत कंट्रीब्यूशन है। सो दिस इज माय फोर अपील टू डिक्लेयर टी एज अ नेशनल ड्रिंक। थैंक यू। श्री इलामारम करीम। Thank you, respected Chairman. So I am raising an important issue. There is an urgent need to extend GST compensation for some more years. The compensation which has been in place till June 30, 2022 was provided through a central legislation. As the 5-year compensation period has ended, the states are no longer eligible for compensation. This is a matter of serious concern for states like Kerala. The fixing of rates and the equal apportionment deprived the states of a revenue neutral in GST. The standard rate of earlier value-added tax, which was 14.5%, fell to 9%. Compensation was a necessary measure to make good the loss consequent to fall in the standard rate
and imbalance resulting for equal apportioning of GST rates. Also, the COVID pandemic has caused a substantial slowdown in economy, with revenues falling and expenditure obligation rising. Kerala also witnessed natural calamities in the 2 years preceding to pandemic. In our scheme of distribution of fiscal powers, there is a vertical imbalance between the union and states in this has been worsening. Sir, states like Kerala are also facing added difficulties to conditionalities imposed on open market borrowings. The revenue deficit grants for Kerala will also cease with effect from the financial year 2024-25. In a view of these facts and circumstances, I urge the government to consider the request of Kerala and other states that the provision for compensation to bridge the shortfall in growth of GST revenues be continued for another 5 years. Sir, I am quoting from a letter sent by Honorable Chief Minister of Kerala to Honorable Prime Minister. He is referring from 15th Finance Commission's report. I quote, in recent years, rising fiscal deficits in many states has been a key indicator of growing vertical imbalances despite higher tax devolution from the union, reflecting inadequate transfers to the states relative to their expenditure need and revenue raising capacity. This is a report of Finance Commission that is itself is not honored by union government. I am very sorry, sir. So I urge upon the government to take necessary action immediately. The honorable member may place the letter on table of the House. Shri Sushil Kumar Modi. सभापति महोदय, बाजार से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपये का नोट है उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सभापति महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमॉनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। सती महोदय, बड़े पैमाने पर लोगों ने 2000 के नोट की होर्डिंग कर रखी है और कि यह केवल अवैध व्यापार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ जगह पर यह ब्लैक में मिल रहा है, प्रीमियम पर बिक रहा है और ड्रग, मनी लॉन्ड्रिंग, क्राइम, टेरर फंडिंग जैसे अपराध में कैश का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और वहां इस 2000 रुपये के नोट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सत्य महोदय, दुनिया की जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, अमेरिका में देखें तो अधिकतम 100 रुपये का डॉलर है, 1000 का डॉलर नहीं है। चाइना में 100 का युआन है, कनाडा में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है। यूरोपियन यूनियन में अधिकतम जो अधिकतम डिनोमिनेशन वो 200 का है। केवल पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों के अंदर 5000 के नोट है। इंडोनेशिया में तो 1 लाख रुपए तक के भी नोट है। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 के यूरो के नोट के प्रचलन को बंद कर दिया था। सिंगापुर ने 10,000 के नोट को 2010 में विड्रॉ कर लिया था। तो सती महोदय, जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए 1-2 साल का कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, 2000 का नोट मतलब होर्डिंग। इसलिए अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 के नोट को बंद करना चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Thank you, sir. Sir,
as you would appreciate, a vast country with rich diversity like India, the policies and decisions cannot be Delhi-centric. Sir, recently, a stipulation has come out which says that there should be 1 kilometer limit from the forests for lives and livelihood of the people. Sir, this has created widespread panic amongst the people of Kerala. Sir, as you know that Kerala is a narrow strip of land having linear orientation, of which 30% is forest. And in fact, 50% we have forest cover, sir. Sir, according to a study now, if the stipulation which has come out is implemented, almost 1 lakh buildings have to be demolished. Cultivation in 4 lakh acres of land needs to be abandoned. Even the High Court of Kerala has to be vacated. Sir, this has got far-reaching impact for the lives of millions of people in Kerala. I would urge upon the central government that a realistic view needs to be taken as to this buffer zone that has been brought in, and the central government has to approach the Supreme Court to make sure that such stipulations are withdrawn ASAP. Thank you, sir. Shri Javed Ali Khan. धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका, सरकार का और सदन का ध्यान दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे अल्पसंख्यक चरित्र दिया गया है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया एक्ट 1988 के तहत संचालित होता है, वहां हो रहे इस एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, जामिया मिलिया इस्लामिया एक्ट 1988 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें तय करता है, उनकी नियुक्ति की शर्तें तय करता है। जामिया एक्ट 5(2) ये धारा रजिस्ट्रार की नियुक्ति और उसकी सेवा शर्तों के बारे में है। मैं इस केस की मेरिट में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो सज्जन आज रजिस्ट्रार के पद पर आसीन किए गए हैं या बिठाए गए हैं, वो सेवा शर्तों का खुला उल्लंघन हो रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया का एक्ट की धारा 23(j) इस बात पर जोर देती है कि जामिया में स्टूडेंट यूनियन होगी, टीचर्स की एसोसिएशन होगी, एकेडमिक स्टाफ की एसोसिएशन होगी और 4th क्लास एम्प्लॉयज की एसोसिएशन होगी। लेकिन पिछले 15 सालों से जामिया में छात्र संघ को भंग किया गया है, उसको पुनर्जीवित नहीं किया गया है। और अभी 2 महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले, जामिया का जो अध्यापक संघ है, जो 1967 से संचालित था, उसको भी भंग कर दिया गया है। उसने अपने इलेक्शन के लिए जिस रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया, आउटगोइंग टीचर्स एसोसिएशन नियुक्त करती है, उस टीचर्स एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर को भी सस्पेंड करके शोकाज नोटिस दिया गया है। सर, जामिया मिलिया इस्लामिया में एक्ट में एक धारा है 44, जो वहां के पुराने छात्रों के लिए एलुमनाई एसोसिएशन बनाने की बात करती है। जामिया के प्रशासन ने उसको भी भंग कर रखा है। सर, ये खुला उल्लंघन हो रहा है। वहां एक धारा है जामिया एक्ट में 5(13), जो जामिया में छात्रावासों के निर्माण पर बल देती है। वहां बहुत छात्रावास हैं, करीब 8,000 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन विगत 2 वर्षों से जामिया के अंदर कोई छात्रावास खुला नहीं है, जबकि वहां 18,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और 8,000 स्टूडेंट करीब करीब। श्री एम सनमुगम। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। Thank you, Chairman, sir. I demand to fix minimum support price of tea
and pay fair wages to tea plantation workers. Sir, plantation industry is actually agro-based industry like tea, coffee, rubber, spices. This industry is a labor-intensive industry, providing assured employment to several lakhs of people directly and indirectly, apart from proving itself as a good earner for foreign exchange. It also contributes to the protection of the sustainable environment in hilly areas and forest land. Under the provisions of the Plantation Labour Act, the management is obliged to provide the workers facilities like housing, medical, education, etc. About 60% of price realized of their products, especially tea, is being spent on wages and such related items. The tea producers are unable to fetch desired prices for their finished goods due to cartelization of the actionees. To prevent any competitive price being allowed to bid in the action centers, there is an obvious mismatch between the cost of production and actual price realized, which leads to acute financial crisis, and many tea planters are closed and tea plantation workers are suffered. I would therefore urge upon the Union Government to determine minimum support price on the basis of Swaminathan Committee recommendation to sustain the tea plantation industry. The government should intervene and see that unfair trade practice cartelization in the action price process are stopped and tea growers get reasonable price for their produce. Tea plantation workers in Assam and Northeast are not paid fair wages, and they are paid only 200 per day, whereas the workers in Tamil Nadu and Kerala are getting more than 400 rupees per day. Therefore, the government should ensure that the tea plantation workers in Assam and Northeast are also paid fair wages so that they could lead a dignified life with their families. Thank you, sir. Shri Sanjay Singh. धन्यवाद मान्यवर, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, इससे ये साफ लगता है कि इनको देश के लोग शुरू कर दिया। ये सरकार का चरित्र है। बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। ऑनरेबल मेंबर, सर प्लीज मान्यवर, हैव योर से। नो वन शुड बी ऑन द चेयर मान्यवर, एक्सेप्ट द वन स्पीकिंग। मान्यवर, ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। 0.5%। सर मैं सर ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है सर। सर ऑनरेबल मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर्स इज ऑन लेग्स। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज टेक। मैं ये कह रहा हूं सर, प्लीज ये ईडी फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट। ये ईडी 10,000 करोड़। Take your seat. Honorable members, when a very distinguished member of this House, while giving his input, referred to a communication written by the Honorable Chief Minister to the Honorable Prime Minister, I directed the Honorable member to put that on table of the House. Why I did it? Because in this House, we cannot allow any member to give out facts that are not substantiated, and that constitutes a very serious breach of privilege. I am very particular about it, whether it is this side or this side. Anything being spoken in this House cannot be in figure. It has to be indicated with precision, with sanctity, and with ownership. And that is why, to a very distinguished member, where it was not required, I wanted that practice to be there, that if a Chief Minister of a state has sent a communication to the Honorable Prime Minister and details are not made available, that should be on record. That will be shared with the members. So the Honorable member can make his input. But while making the input, it has not to be a speech. The Honorable member must focus on actual figures
And I will call upon the honorable member to put the relevant record on the table of the House. If the record is not there, I may seek guidance from the honorable members that will be breach of privilege of this House. Because this House, one second, this, number one. Number two, this House has, this House, one second, this House has to be a platform of putting across everything that concerns the public at large. Any expression cannot be controlled here. The only controlling factor is we have to believe in sanctity of the document. A newspaper report, an opinion given by someone is absolutely of no consequence. What I need is legally admissible documentation must be the premise of making an allegation. Honorable member. बहुत अच्छी बात आपने कही सर, बहुत ही अच्छी बात आपने कही सर। 1 मिनट बोलने दीजिए सर, 1 मिनट बोलने दीजिए सर। प्रियंका चतुर्वेदी इस सदन की प्लीज मुझे one second. Sir, don't show up paper like this. नहीं सर, let us not have that. ऐसे बोल देते, ऐसे बोल देते। Otherwise, we'll be engaging in and honorable members, leader of the House, leader of the opposition. सर, धन्यवाद, आपने मुझे 2 बात कहने के लिए परमिशन दी। तो इस सदन में जो आपने कही कि फैक्ट्स, फिगर्स और ऑथेंटिसिटी के साथ बात करना चाहिए। सर, जो भी सदस्य यहाँ पर बात करते हैं वो या तो अनस्टार्ड क्वेश्चन से जो रिप्लाई मिलते हैं या स्टार्ट क्वेश्चन से जो रिप्लाई मिलते हैं उस आधार पर भी बात करते हैं। और मीडिया जर्नल, आप उसको मानो या न मानो, आप उसको कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हमको कभी मीडिया का भी फिगर्स लेना पड़ता है, जर्नलिस्ट जो आर्टिकल लिखते वो भी लेना पड़ता है, कभी सदन में अनस्टार्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई आते वो लेना पड़ता है, या स्टार्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई वो देते वो लेना पड़ता है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर बाहर बयान देते हैं वो एक बहुत बड़े आदमी होते हैं, 2 करोड़ नौकरियां देने का। अगर हम बोले तो आप बोलेंगे ऑथेंटिसिटी क्या है? 15 लाख का अगर हम कुछ बोलेंगे आप बोलेंगे ऑथेंटिसिटी का। अरे ये तो जबान से निकली हुई है, प्राइम मिनिस्टर के जो जबान से निकलती है हम ये समझते हैं ये उनकी ऑथेंटिसिटी है, उनके फिगर्स करेक्ट है, उस आधार पे ही हम उठाते हैं। तो इसीलिए कृपया करके आप हर बात को ये कहना। Leader of the House. अध्यक्ष जी, one second. Leader of the House, please. Honorable members, I am so glad that we are deliberating on an important issue that will give us an insightful approach how to deal with the situation on the floor of the House. We have the benefit of leader of the opposition. Anything reflected on the platform of this theater by way of starred question response or unstarred carries sanctity. I will have a meeting with the floor leaders. I'll have meeting with the floor leaders. I am of the opinion so far that this platform is very august platform. Anything reflected here, the person must own the statement. And that statement has to be on the strength of authenticated, sanctified documentation. If the honorable members and floor leaders have a perception on it, I will have a special meeting with them tomorrow, get their input, and we will have a way forward stance, Leader of the House. Honorable Chairman, sir, this has become a very regular practice of shoot and scoop. You just make any allegations. One second.
1 second, 1 second, please. Honorable member, Sonia, would you please take a seat? Are we, honorable leader of the House, I think I have made my point very clear. 1 second, wait for your turn. Doesn't matter, take your seat. Please take your seat. Sanjay Singh, take your seat. Take your seat. Take your seat. Miss Priyanka Chaturvedi, take your seat. Number 1. Number 2, it does not look nice for me. I'm getting a lot of disturbed inputs from academia for students that every time there is something and there is a trigger to rush to on the seat, why be there crosstalk? Honorable member, I'm here. If you have to say to me. Forget about it. They are being dealt with equally on the same footing. So let's not have it. We heard the leader of opposition in rapt attention. He had a point to say. Leader of opposition has made 4 important points. They are the points we need to deliberate. Similarly, leader of the House, and I'm sure the leader of the House would maintain the same level so that we act towards a mechanism, we evolve a system, and we abide by that. Leader of the House. Honorable Chairman, sir, of late we are finding that it has become very simple. There are a number of websites, a number of social media platforms on which people make all sorts of claims which are unsubstantiated by fact. They are not backed by any starred or unstarred questions, response in Parliament. They are not even backed by RTI. Suggestion. We have, Honorable Chairman, I need a minute. We have a lot of cases where then when you fact check it, you come out with fake claims. Your suggestion. Therefore, when a very senior member of the House, who is also sitting in the front row, makes a claim that 3,000 political राजनीतिक 3,000 लोगों के ऊपर छापा. I mean, I think it's completely erroneous. Your point is he has made it without any substance. Similarly, sir, he is making allegations which are before the court. The court demands, and there is a special directive of the court that action should be taken on MPs, MLAs, elected representatives who are found to be culpable in any economic or other offence. We are on the contrary doing a public service. हम देश की जनता की हितों की रक्षा कर रहे हैं, जो चाहती है कि जो राजनीतिज्ञ है वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोप्राइटी को मेंटेन करें और देश का कोई कानून इम्यूनिटी नहीं देता. चेयर और देश का कोई कानून राजनीतिक लोगों को इम्यूनिटी नहीं देता. Take your seat now. Honorable members, please. Honorable members, if I have chosen to hear leader of the opposition who volunteered to make an input and leader of the House, no further discussion on the point. I will have a meeting with the floor leaders and also with leaders of the smaller parties, nominated members and independents, and we will have a mechanism. I personally believe that this theatre is too sanctified to get an input of which the member does not take responsibility. And if any member makes a statement in any manner whatsoever, placing reliance on anything, and that can't be sanctified, it has consequences. Sanjay Singh, and confined to your point, don't flank papers. Just make your point. उनको आपने अलाउ किया, मुझे ना अलाउ करें, मैं वैसे ही बोलूंगा, बगैर पेपर के बोलूंगा. अब इसी में अगर no point in zero. सर यहाँ इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं. उनके जवाब में सरकार ने
ये बताया कि 3000 छापे ईडी के द्वारा मारे गए और मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया। मेरा इनसे सवाल यह है कि ये ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहां बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर। बंद कर दीजिए विपक्ष। 100 दिन रह गए सर संजय रावत। Point well taken. Take your seat. 100 दिन रह गए, बाद में कह दिया इलीगल है। Take your seat. बाद में कह दिया इलीगल सर। Please take your seat. सर मेरा 3 मिनट का समय था, 1.5 मिनट इन लोगों ने खाया है। आपसे अनुरोध है 1.5 मिनट दीजिए। मैं सर ऑनरेबल दिल्ली one second. इन लोगों ने क्या Honorable member, वो बता के बात खत्म करूंगा। Honorable member, सर हमारे Honorable member, let me caution you, and I'm using the word with sense of responsibility. Are you aware when a point of order can be raised? Not in 0 hour. But not in 0 hour, not in 0 hour. So, honorable member, one second, it's over. Honorable member has made some reflections. You all are aware, in public domain, it will be difficult to sustain them. To make a sweeping statement on this platform that no action is being taken, where multiple adjudicatory mechanisms have taken place. We cannot allow this platform to be used that you say nothing has been taken. Make your point carefully. I will examine all that the honorable member has said, and the honorable member will be called upon to substantiate it on the floor of the House and leave it on the table. I now... इमरान प्रतापगढ़ी नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराज गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सकें। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित वेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारी आंख में आज भी, हमारे कानों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों
आवाजों की चीखें मौजूद हैं। सभापति महोदय, आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीर टंगी है शिक्षक राधापल्ली सर्वकृष्णन जी की, ये आपसे कह रही है कि देश के कैंपस बचाइए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं, दिल्ली चुप है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। हम इस सदन में आपके सामने सबकी फरियाद लेकर खड़े हैं। धन्यवाद। Honorable member will put on record on the table the decision referred to him by. You have made reference to a decision. Put it on table of the House. Dr. Lakshmikant Vajpayee. आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए 1857 की क्रांति नगरी मेरठ के संबंध में एक महत्वपूर्ण समस्या पर आपको सामने विषय रख रहा हूं। मेरठ में 2014 में अंबेडकर हवाई पट्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई थी और उसके बाद मेरठ में आरसीएस योजना में छोटा एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी। 1500 मीटर की हवाई पट्टी है। जब उस पर जूम एयरवेज की बिड हो गई, 40 सीटर उड़ाना तय हो गया, उसके बाद अधिकारियों ने गड़बड़ करके वहां पर ATR 72 के लिए बात करनी शुरू कर दी। 2014 से किसानों की जमीन आरक्षित है एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास और 5800 रुपए रेट तय है। न किसानों की जमीन ली जा रही है, न एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि अब अधिकारियों ने एक नया किया है कि 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाएंगे। मेरठ से कभी भी 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाने के लिए आर्थिक वायबिलिटी नहीं है। ATR 72 उड़ा दें, फिर आवश्यकता होगी तो बड़ा उड़ाना है। मेरठ से लखनऊ और इलाहाबाद, मेरठ से जालंधर और जम्मू 4 छोटे जहाजों की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से, आपसे भी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तत्काल आरसीएस योजना में जिसमें छोटे एयरपोर्ट उड़ाने की बात तय हुई थी, उसको 6 महीने के भीतर उड़ाए। वहां पर टर्मिनल भवन तैयार है, 1500 मीटर हवाई पट्टी है, 300 मीटर हवाई पट्टी के लिए किसानों की जमीन आरक्षित है। अगर उसको 300 मीटर बढ़ा दें तो ATR 72 उड़ जाएगा और 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाने की जो कल्पना है, ये अधिकारी धोखा दे रहे हैं और 1857 की क्रांति नगरी मेरठ के नागरिकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं उस अन्याय का विरोध करता हूं। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और विगत 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। दुर्घटनाएं सामान्यतः होती है, लेकिन किसी निश्चित स्थानों पर होना गंभीर चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का रहने वाला हूं। आज देश में लगभग सभी लोग निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धार जिले में स्थित खलघाट मानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के मध्य होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जानते हैं। इस मार्ग पर न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को और छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अपने माता पिता और अन्य सगे संबंधियों को खोया है और ये दुर्घटनाएं निरंतर बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, इस मार्ग के गणेश घाट पर 2 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी है, जो कि निरंतर होने वाली घटनाओं का स्थान बन चुका है। यह एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसका निराकरण अविलंब होना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज मैं सदन के समक्ष खलघाट मानपुर दूरी लगभग 50 किलोमीटर सड़क दुर्घटनाओं के विषय पर हुए एक अध्ययन का जिक्र करना चाहूँगा, जिसके अनुसार वर्ष 2016 से 2018 तक कुल 978 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1267 लोगों की मृत्यु हुई है। इस दौरान वर्ष 2016 से 2018 के बीच 626 माइनर बच्चे एवं न जाने कितने नौजवानों की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। क्षेत्र के जनता ने इस सड़क मार्ग पर
गणेश घाट पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, मार्ग की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए कई बार मांग की है, जो आज भी लंबित है। माननीय सभापति महोदय, मेरा सरकार एवं माननीय परिवहन मंत्री जी से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि इस सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए ठोस से भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कोई मूल्यांकन होना चाहिए ताकि कोई मां अपने लाल को और कोई बहन अपने भाई को राखी बांधने से वंचित नहीं रहे। मेरा यही विनम्र आग्रह है। जय हिंद, नर्मदे हर। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। So much, Honorable Chairman, sir. Sir, हाल ही में एम्स में जो साइबर अटैक हुआ था, उसने एक देश में जो हमारे साइबर अटैक्स का इशू है उसको हाईलाइट किया। दो चीज़ें हाईलाइट हुई उसमें सर, एक तो है जो डेटा प्रिवेसी की हम बात करते हैं, डेटा ब्रीच की बात करते हैं, वो सामने आई, और दूसरा कि किस तरीके से सारे सिस्टम्स क्रिपल हो जाते हैं एक साइबर अटैक के चलते, वो हाईलाइट हुआ है सर। पर उसी के चलते सर एक सेकेंड, आप पूरा सुनने की क्षमता तो रखिए सर। यहाँ पर आपने मुझे ये इजाजत दी है कि आपके समक्ष मुद्दे को रखूं, और किसी और की इंटरप्शन इसमें सही नहीं है सर। तो पिछले 3 साल में 3 गुना इजाफा हुआ है साइबर अटैक्स में। हमारे जो साइबर सिक्योरिटी के फंड्स हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, और मेरा कंसर्न फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सजेशन था, क्योंकि अब तक हमने आईटी मिनिस्ट्री का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा है, और पिछले 3 साल में अगर हम डेटा ब्रीचेस देखें तो एयर इंडिया डेटा ब्रीच हुआ था, जिससे मलेशिया एयरलाइंस हो, सिंगापुर एयरलाइंस हो, उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। पुलिस एग्जाम डेटाबेस भी ब्रीच हो चुका है, कोविड-19 के टेस्ट रिजल्ट्स भी लीक हुए हैं, आधार डेटा रिलीज हुआ है। तो ये मैं मानती हूं, बार बार कहा जाता है कि अब वॉर्स जो होंगी लैंड पे नहीं होंगी, साइबर स्पेस में होंगी, तो हमें अपनी आपको, और कमेटी रिपोर्ट भी कहती है कि हमें अपने आप को पुख्ता करना पड़ेगा। जो हमारे हेल्थ स्पेस में अटैक्स हुए हैं उसमें इजाफा करीब 95% हुआ है सर। तो आपके माध्यम से मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल स्पेस में हम लीड कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी हमें लीड करना चाहिए, एक रेवोल्यूशन है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटाबेस होना चाहिए, जिससे इस तरीके के साइबर अटैक से हम अपने देश के डेटा को सुरक्षित रख पाए। थैंक यू सर। श्री हरनाथ सिंह यादव। कमेटी में कैसा काम किया मैं जानता हूँ। माननीय सभापति जी, मिला जुला के मैं आपके माध्यम से जनहित से जुड़े एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, क्योंकि वह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अहमियत को बाधित करते हैं, बल्कि देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को भी विघटित करते हैं। महोदय, देश भर के सभी 32 वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के होते हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी, और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय, उदाहरण के लिए आप झुंझुनू जिले से आते हैं, यदि आपके मकान या कृषि भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो आपके पास किसी न्यायालय में भी जाने चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी जमीन छीन ली है। अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। माननीय एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है चेंथरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। महोदय, एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है, देश में अलगाव व नफरत पैदा करता है, देश की एकता तथा अखंडता तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है। महोदय, मैं इस एक्ट का निचोड़ एक वाक्य में बोलना चाहूं तो कहूंगा कि वक्फ एक्ट 1995
भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अतः मैं सरकार से देश हित में इस असंवैधानिक और अतार्किक वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द करने की मांग करता हूं। Sir, he should substantiate the facts, and sir, you should take I'll take it. and remove Take your Shri Vaiko. Shri Vaiko. Take your seat, honorable member. Take your seat. Take your seat. Solved by the government of Karnataka. Nobody is raising already solved the problem. Shri Vaiko. Mr. Chairman, sir, this has been already settled by the government Shri of Vaiko. Tamil Nadu. Then why he is raising this here? It is unwarranted. Honorable member. Yes. Your 0 hour. Shri Vaiko, please continue. Do you have your 0 hour? Name is not in the list, but he is calling you. Out of the list. Shri धनंजय महादिक। धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति जी, मैं समझता हूं किसी भी शहर का अगर पूरा और परिपूर्ण विकास होना है तो उसे अच्छी कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, और सबसे महत्वपूर्ण है सर एयर कनेक्टिविटी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को संज्ञान में लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आरसीएस स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जो छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए उड़ान योजना लागू की थी। उड़े देश का आम नागरिक ये कह के जो हवाई चप्पल पहनेगा वो भी हवाई जहाज में सफर करेगा, ऐसी स्लोगन देके ये योजना शुरू की थी सर। सभापति जी, महाराष्ट्र में सोलापुर जिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा जिला है सर। यहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है। सोलापुरी ब्लैंकेट, सोलापुरी तौलिया, नैपकिन पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है सर। यहाँ पे देश की सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्री सोलापुर में है सर, 38 शुगर फैक्ट्रीज है। यहाँ पे पोमोग्रेनेट और ग्रेप्स बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है, और इसी के चलते जो यहाँ पे सोलापुर में होडगी रोड में सर, हाफ मिनट सर, क्वेश्चन सोलापुर सर, होडगी क्वेश्चन नंबर 46 प्रोफेसर मनोज कुमार झा। थैंक यू ऑनरेबल। दूसरों को दे दिया चांस। क्वेश्चन नंबर 46 ऑनरेबल मिनिस्टर, सप्लीमेंट्री 1। Thank you, Honorable Chairman, sir, and thanks to Honorable Minister as well. My supplementaries are very basic. First is, how many people were living in Delhi's Prem Nagar or Tyagraj slum, which has been demolished, and whether any action has been taken against the authorities who demolished these slums without giving prior notice of demolition to the dwellers? Honorable Minister. Sir, I am very grateful to the Honorable Member for having raised this question, because this provides me an opportunity not only to share some facts, but also to provide a perspective. I would just like to start at the beginning. The Honorable Member has used the term demolish, and he has used the word slums. Let me state and submit to this House, sir, that the policy of the government of the National Capital Territory of Delhi is a policy which was enunciated by the government of the National Capital Territory of Delhi on 11th December 2017. Personally, whenever I have appeared before this August Assembly, always suggested that we use terms like informal settlements, because that term describes what actually happens. The term slum, sir, if I have your permission, is not only a pejorative, but it also points in the direction of failure of policy and other issues. This policy of the government of Delhi of 11th December 2017, which via a subsequent notification
has been turned by the government of Delhi as the Mukhyamantri Awas Yojana, but which is actually a slum rehabilitation or an informal settlements relocation policy, stipulates in very clear terms, and I want to read out a few basic provisions of this policy. It stipulates, sir, that eligibility for rehabilitation or relocation should be there for all Jhuggi Jhopri Bastis, and I choose my words very carefully. Jhuggi Jhopri Bastis which came up before 1st January 2006. These shall not be removed without providing them alternate housing. Jhuggis which have come up, now these are individual Jhuggis, which have come up after this or before 1st January 2015 shall not be demolished without providing alternate housing. This is the stipulation. It goes on to say, no new Jhuggis will be allowed in Delhi. No new Jhuggis comes up after 1st January 2015. If any Jhuggi comes up after this date, the same shall immediately be removed without providing them any alternate housing. It also goes on to say that the government of the National Capital Territory of Delhi will use the following methods to ensure that no new Jhuggi comes up. Government of National Capital Territory of Delhi has stated that procuring satellite maps every 3 months to keep an eye on any new constructions, new illegal constructions would not be removed immediately. Number 2, Government of National Capital Territory of Delhi is willing to do joint inspections with landowning agencies at regular intervals, and any fresh Jhuggis would be removed immediately. This is the Delhi government policy, sir. Number 3, Government of National Capital Territory of Delhi would enroll volunteers from Jhuggi Jhopri Bastis who will act for the government and would inform government if any fresh Jhuggi comes up in the area. Honorable Member, now I Honorable want to Minister, come. Pointed response. Pointed response now, sir. The 7 government colonies which are coming up for redevelopment are spread over an area of 536 acres. 536 acres. And the number of Jhuggi households which have been identified, both eligible and ineligible, is 507, which means what we are dealing with is less than 1 Jhuggi per acre of land. It is 0.8 acres. That is 1 Jhuggi in less than 1 acre of land. Now, what we have done in terms of eligibility, for rehabilitation relocation, 100 EWS flats at Narendra have been purchased from the DDA, out of which 90 have been allotted to eligible Jhuggi households, of which 5 have already taken possession. After that, what happens, sir, is a large number of Jhuggi dwellers, whether eligible or ineligible, went to the courts and obtained the number of stays. What we have here is, sir, in Sarojini Nagar, 136 applicants went to the Supreme Court, 53 to the High Court. I can list out all these. What has happened, sir, here, and the answer provides, in the particular question that has been asked, the answer is in the body of the question has been answered in the body of that. There were apparently 12 there. Those who are ineligible, the local authorities will or they will move out. The eligible ones, we have provided alternate accommodation. Only very few have moved in there, and we stand ready to pursue that process, but it will be subject to the clearance of the courts, both the Supreme Court and High Court. Supplementary 2. Honorable Minister beats Winston Churchill in using the words. Thank you, sir. But my question was whether any action has been taken on authorities who were involved. My second supplementary is that in view of Ajay Makhan versus Northern Railway 2019, the judgment, DDA had to follow rehabilitation policy of Delhi government. I would like to know from Honorable Minister, which rehabilitation and resettlement policy does DDA follow if you if you undo, I won't say demolish, undo an informal settlement?
Thank you. Honorable Minister, very pointed response, a pointed question. Very pointed response to a very pointed question. Sir, the answer simply is that the policy pertaining to the Delhi government has been framed, has to be implemented by the Delhi government. I can tell you what the DDA is doing. Sir, I can tell you that there are a total. Take your seat. Sir, there are a total. Honorable member, take your seat. There is a method how to raise an issue. Sir, there are a number of what are called JJ clusters. There are 299 JJ clusters which are under DUSIP. Honorable Minister, and there are 376 under DDA. Honorable Minister, the honorable member has pointedly sought response to a specific situation. You may respond. May I respond to that? Please. Out of the 300 plus 370 or so JJ clusters which are with the DDA, we have already done surveys in 210 of them. Recently, the Honorable Prime Minister released 3,000 flats in Kalkaji to the beneficiaries. 2 such other projects are ready. And we have under very advanced stage of processing the conversion of all the DDA clusters, JJ clusters under the DDA, which will be given modern flats. Except, let me place on record, those clusters which are under DUSIP, I have said since the Delhi government has not moved on them, the central government will conduct a survey and get them built into modern flats. Because the Delhi government has not moved on that. Shri Vijay Sai Reddy. Sir, we have only 3.52 homes have been sanctioned in situation development, redevelopment, sir. That is redevelopment of slums for providing concrete homes to slum dwellers in the same place under Pradhan Mantri Awas Yojana. And why is this vertical the most underperforming among the all components of PMAY scheme? Honorable Minister. Sir, the Pradhan Mantri Awas Yojana is carried out under 4 verticals: affordable housing in partnership, beneficiary-led construction, CLSS, and in situ slum rehabilitation. Sir, all 4 verticals move on their own dynamic. The BLC vertical is if you own traditional family home, you will come to the government for a loan. The CLSS perhaps looks to be faster because it's a very simple. You locate a house which you want to buy or an apartment which you want to buy, typically a young couple which has got married and they need to raise a bank loan. They will go for a CLSS loan, they will get 3% upfront. In situ slum rehabilitation by its very definition requires the uprooting of people for some time. Let's say we have a policy now, jahan juggi wahi makan. That is, if you have an informal settlement in a place X, we will settle you there. But in the interim period, you will have to move to another place till it is done. So I think there may be an explanation. But in situ slum rehabilitation, as I said, we have done surveys of 210 JJ clusters. We have already got 3 very good showcase pieces, which the Prime Minister released one, and all the others are going to come up. One in January and the other very soon. Shri Sushil Kumar Gupta. माननीय मंत्री जी, दिल्ली की सारी जमीन डीडीए के पास है। डीडीए दिल्ली में स्लम बनाती जा रही है। लैंड पूलिंग पॉलिसी में पिछले 20 साल से एक भी आपने प्रोजेक्ट पास नहीं किया। दिल्ली के किसान सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मेंबर उसे सप्लीमेंट्री बात सर, मैं सर अपनी बात पूरी कर दूं सर, मैं पूरी बात मैं अपना क्वेश्चन कर लूं सर। कम विद क्वेश्चन। दिल्ली के अंदर हर चुनाव में भारत सरकार बड़े बड़े बोर्ड लगाती है, जहां झुग्गी वहां मकान। दिल्ली के अंदर रेलवे लाइन के किनारे सैकड़ों स्लम है। दिल्ली इंतजार कर रही है। मेरा क्वेश्चन वही है सर, मैं क्वेश्चन पा रहा हूं सर, सीधा क्वेश्चन पा रहा हूं सर। आज तक केवल 2 प्रोजेक्ट पास हुए, कठपुतली कॉलोनी का और कालका का, वो आपकी सरकार आने से पहले। आप कौन से प्रोजेक्ट कब ला रहे हो और कब इन झुग्गी वालों को मकान दे रहे हो, सपने दिखाते रहो। Honorable Minister, I am very happy to hear from the honorable member who belongs to Delhi that he has just handed over all the clusters, 299 JJ clusters to the DDA, which are under DUSIP. Let me correct his understanding. Land is not owned all by the DDA. There is in Delhi DDA land, there is
land owned by the LNDO, and there are other issues where you have a role to play. But if you decide to abdicate that responsibility, I've already offered all 299 clusters, we'll take over and develop them there. Because we have not even received a proposal from the state government for this. Sir, I have a pointed question for a pointed response. For all such projects, will the government assure this House that the dwellers there, the poor people, they will be rehabilitated and then only the project begins? I thought I took the liberty of explaining in some detail what the policy is. This is a policy enunciated by the Delhi government in an order of 11 December 2017, which says that all settlers or informal settlements before 2016 in terms of bastis and all individuals who have there, they have to be rehabilitated. And this is precisely what the government in the center is doing. We would like all the others similarly to follow this. No, actually they've gone to the court. Otherwise, you would have a situation. Per acre, there is less than one juggi. And that also is in front of the court. And we follow the norm scrupulously. I wish that were the case in some other areas also. Question number 47, Shri Mastan Rao, Bida. माननीय सभापति महोदय, सभापटल पर रख दिया गया उत्तर. Honorable Minister. सभापटल पे उत्तर रख दिया गया सर. हाँ, सभापति महोदय. आप तो आधा घंटा ले ही लोगे. Thank you, Chairman, sir. Question number 47. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, उत्तर सभापटल पर रख दिया गया है. Supplementary one. Sir, thank you, sir. Does the government intend to increase the provision of repayment of loans for MSMEs from 90 days to 180 days, as the working cycle of MSMEs may extend beyond 90 days and improve their repayment ability? Supplementary two. माननीय सभापति महोदय, माननीय मेंबर ने अच्छा प्रश्न किया है. विशेष रूप से उन्होंने जो एमएसएमई की ऋण सीमा है उसे बढ़ाने की बात की है. विशेष रूप से जो एमएसएमई है, हमारे जो क्वेश्चन में जो दिया गया है कि एमएसएमई की जो पीएमईजीपी है वो एक स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य से तैयार की गई एक प्रमुख क्रेडिट लिफ्ट सब्सिडी है. इस योजना के अंतर्गत पूर्व में संशोधन भी किया गया है. उसमें विशेष रूप से सेवा कर में जो 10 लाख रुपए दिया जाता था उसे 20 लाख रुपए कर दिया गया है, और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग में जो उसमें 25 लाख था तो उसे 50 लाख कर दिया गया. इस तरीके से योजना को बढ़ाया गया है. Honorable Member, second supplementary. Yes, sir. Thank you, sir. What efforts MSME Ministry is taking for implementation of existing schemes, and what action against non-compliant government organizations? Honorable Minister. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, विशेष रूप से इन्होंने जो प्रश्न किया है उसमें ढेर सारी योजनाएं आरबीआई की योजना के द्वारा चलाई जा रही हैं. विशेष रूप से हम लोग कह सकते हैं कि आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, ईसीएल जीएस योजना, इन योजनाओं के माध्यम से हम लोग जो यूनिटें हैं उनकी मदद कर रहे हैं. श्रीमती रंजीत रंजन. जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूं कि विगत 3 वर्षों में आप ऋण बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विगत 3 वर्षों में देश में कितने लघु सूक्ष्म उद्योग है बंद हुए हैं? क्या यह सच है कि 2016 नोटबंदी के बाद आज तक जो एक आंकड़ा आ रहा है, वो सरकारी आंकड़ा मैं नहीं कह सकती, लेकिन 50-60 लाख एमएसएमई उद्योग धंधे बंद हुए हैं? क्या ये सही है? और क्या जो सरकार है इसका आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा सार्वजनिक करेगी कि आज तक 2016 से अभी तक कितने लघु उद्योग एमएसएमई उद्योग बंद हुए हैं, उसका क्या आंकड़ा है? ऑनरेबल मिनिस्टर. सभापति महोदय, जो लघु उद्योग बंद हुए हैं वो अभी पहले बंद नहीं हुए हैं, अभी हाल में कोरोना काल के समय बंद हुए हैं. कोरोना काल में जो बंद हुए हैं उन्हें सुचारू करने के लिए देश के उसी प्रधानमंत्री ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी.
उसमें 3 लाख रुपए उसे दिए गए थे। इसके बाद 1.5 लाख रुपए और उसमें जोड़े गए। अभी जो बजट पास हुआ है उस बजट में भी 50,000 करोड़ रुपए ऐड किए गए। 5 लाख करोड़ का ECLGS का योजना जो बनाई गई है उसमें विशेष रूप से जो सिक हो गई थी, जो किसी तरीके से बीमारी हो गई थी, उन कंपनियों उन यूनिटों को ये पैसा दिया गया है। श्री तिरुचि शिवा। Sir, thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, the MSME is a very important sector in the country. Question, sir. Ask your question. Sir, my question, sir. The MSME sector, which is a very important sector in a country like ours, which is thickly populated and unemployment looms at large. And recently, when the committee had an interaction with the bank officials, we came to know that the PMEGP. Your question, sir. PMEGP, which is the main source of income for the small entrepreneurs, are only, the applications are entertained only through online. Sir, rural women and those illiterate in the urban are not. Sir, what is your question? Cannot access to the online. So I would like to know the minister. Number one, whether I think take necessary steps to continue offline applications also, yes, and also in all the regional languages, because the applications are only in Honorable Hindi and Minister. English, and all the regional languages should be in the application. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, इन्होंने PMEGP की जो बात की है, विशेष रूप से हमारी जो MSME है, हमारे जो जितने भी वो हैं उन्हें मदद करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। और विशेष रूप से इस योजना के अंतर्गत हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र सब्सिडी उसमें दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो हमारा जनरल हमारे लोग हैं उनके लिए 15 और 25% की सब्सिडी ये है। और उसी तरीके से SC, ST या OBC, उसके अलावा महिलाएं या पर्वतीय लोग हैं उनके लिए 25 से 35% तक ये सब्सिडी दी जाती है। उस सब्सिडी के आधार पर ये लोन दिया जाता है और MSME को ये सारी चीज़ें व्यवस्था की जाती है। श्री वीरेंद्र प्रसाद। बस हो गया। Thank you very much, sir. One second. Honorable Minister. सभापति महोदय, सम्मानीय ज्येष्ठ सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है उनके बारे में उन्होंने जो कहा है कि ऑनलाइन तो चालू रहेंगे मगर ऑफलाइन से एप्लीकेशन आने का वो स्वीकार होगा क्या, इसके बारे में सोच के सजेशन फॉर एक्शन मैं देखूँ। Honorable Member. Thank you very much, sir. The scheme is very good. Through this scheme, credit facilities given to the marginal small industries, sir. Sir, your question. Yes, sir. Sir, ground reality is something different, sir. I tell you, Honorable Minister, generally Nodal agency took the... Sir, address the Honorable Minister through me and ask a good question so that I can direct the Honorable Minister to respond. Sir, Nodal agency took the application offline and online. The application received by Nodal agency, they recommended it banks for the credit, sir. But in ground reality is that bank is not obliged this application. More than 60% Your question, sir. Yes, sir. More than 65% application rejected by banks, sir. I want to know from our Honorable Minister, if Government of India is going to some simple mechanism to help the grassroots. Honorable Minister. सभापति महोदय, विशेष रूप से इनका कहना ये है कि लोन के जो फार्म भरे जाते हैं बैंक उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। उनके बैंक विशेष रूप से लोन का जो प्रोविज़न है देने का बैंक उन्हें वो प्रोविज़न अपनाता है और उसमें एक कैटेगरी दी जाती है। उसमें ट्रेनिंग की भी सारी चीज़ें, अगर कोई चीज़ नहीं आती है, अगर कोई समझ में भी आती है, कोई शिकायत भी हम लोग को प्राप्त होती है तो हम लोग सीधा ज़िले में LDM से बात करते हैं। LDM का अधिकारी होता है, नोडल अधिकारी होता है, उससे कहते हैं इस केस को देखिएगा कि किन कारणों से ये लोन नहीं होगा। वो लोन होता है, विशेष रूप से उसकी फुलफिल करने के बाद ये लोन गरीबों को दिया जाता है। Question number 48, Shri Abdul Wahab. Question number 48. उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। Supplementary one.
once Gandhiji told in India, water, water everywhere, not a single drop to drink. This is, don't interfere, Mr. This one. When I am talking, everybody's interfering. Avail the opportunity to ask a question. Yeah, what's he asking? This Jal Jeevan Mission, it is a wonderful project. Even though it is a state subject, the central government came with Jal Jeevan Mission. We all welcomed and appreciated. Yes, Kerala is full of water, but we are going to get tap water, potable water. But what measure they have taken by the government to ensure clean water in every household, as per declared 2024. Honorable Minister. Hargar Jal. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के अध्यक्ष से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी तथ्यात्मक बात कही है। 15 अगस्त 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो एक महत्वाकांक्षी संकल्प लिया था, मैं योजना नहीं कहूँगा, संकल्प कहूँगा, क्योंकि उन्होंने गांधी जी से अपनी बात शुरू की है। उस संकल्प के पूर्ति के और परिणाम के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। और उसका परिणाम यह है कि जब 15 अगस्त 2019 को 3.23 करोड़ परिवारों के पास में पाइपलाइन के द्वारा पानी था, जो देश का 16.72% था। आज की तारीख में 10.68 करोड़ परिवारों के पास पानी है, जो देश का 55.24% है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो बात माननीय सदस्य ने कही है, केरल ऐसा राज्य है जिसके पास में 15 अगस्त 2019 को 2.23.55 ग्रामीण परिवारों में नल से पानी था। लेकिन आज, और जो समय देश की औसत से 16.72 अधिक था, उससे अधिक था राष्ट्रीय उससे औसत से, लेकिन आज देश का औसत 55% से ज़्यादा है। लेकिन केरल का प्रतिशत 45% है, वहाँ पानी है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, भारत सरकार पैसा दे रही है, करना राज्य सरकार को है, उनको योजना उनको member second supplementary. This is an authenticated report, not just I am telling. According to me, reply received from Rajya Sabha, 5 lakhs of schools are not having tap water. Can you, when in the 2024 you can do this one or not? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने भी कहा है, सदन भी जानता है कि पानी देने का काम राज्य सरकार का है, लेकिन सुविधाएं और पैसा प्रदान करने का काम भारत सरकार कर रही है। देश का जो औसत है स्कूलों का वो 85% है, जिसमें झारखंड जैसे राज्य हैं जो बहुत पीछे है, उसके कारण शायद राष्ट्रीय औसत घटा है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर 99% भी स्कूलों में पानी पहुंचा है। केरल के बारे में मैं फिर वही कहूंगा कि केरल सरकार अपनी कार्यप्रणाली में तेजी लाए, श्री ब्रजलाल लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री ब्रजलाल। उत्तर प्रदेश के 16 जिले ऐसे हैं जिसमें बलिया, बस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, उन्नाव, बरेली, सिद्धार्थनगर जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, बलरामपुर, मुरादाबाद, रायबरेली और बिजनौर, इन जिलों में पानी में परमिसिबल लिमिट से अधिक आर्सेनिक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसको प्रायोरिटी पे लेकर आर्सेनिक जल कब तक उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय सभापति जी महोदय, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 2016 में चाहे फ्लोराइड से प्रभावित जितनी भी हमारी बसाहट थी वो लगभग 14,000 थी। आज 662 बसाहट शेष है, जिसमें 433 में CWP के तहत उनका उपचार किया गया है। आर्सेनिक की स्थिति भी यही थी कि 2016 में 14,143 हमारी बसाहटें थी, लेकिन आज की तारीख में 761 बसाहटों में से 559 में ये प्रयोग कर दिया गया है। माननीय सदस्य से को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये लगातार प्रक्रिया जारी है और इस आंकड़े से हम समय पर पूरा करेंगे। Har Ghar Jal is a good initiative, sir, which got inspired from Mission Bhagirath from Telangana. The Honorable Minister in his reply said it is a state subject. Government of India only supplements with technical and financial assistance.
will the Honorable Minister kindly enlighten me of the proposal sent by Niti Aayog recommending 19,000 crores to Telangana state, which had initiated this Har Ghar Jal under the Mission Bhagiratha Honorable program. Minister. So I would like to know, would the Honorable would Minister. they release the funds? माननीय सभापति महोदय, जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था तो राज्यों ने अपना लक्ष्य तय किया था। अगर राज्य के लिए पैसा देने की बात है तो ये ग्रांट नहीं थी, बल्कि ड्रा करने का सिस्टम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ने सरकार ने तय किया। पिछले वर्ष का उदाहरण मैं कहूंगा कि 60,000 करोड़ का लक्ष्य था और अभी तक राज्य कुल 22,774 करोड़ ही ड्रा कर पाए। श्री सस्मित पात्रा। Question to the Honourable Minister is, considering that there has been issues of contamination, as a previous member has already mentioned, are there some specific cases of contamination that has been found in the state of Odisha per se? And what are the steps that the ministry has taken in order to... Honourable Minister. मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य को और विद्वान सदस्य से, मगर मैं उनकी जानकारी के लिए कि 2073 प्रयोगशालाएं देश में हैं, जिसमें 966 NABL है। एक पैरामीटर ये है कि हमारी लैब्स उसको टेस्ट करती हैं और दूसरा है कि हर पंचायत में 5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और वो संख्या भी थोड़ी नहीं है, वो 15,40,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है जो अपने किट के माध्यम से अपना खुद के घर का पानी या गांव का पानी टेस्ट कर सकती है और ये लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है और मैं मानता हूं कि गुणवत्ता के लिए हम अपना पानी खुद टेस्ट करें कि वो पीने लायक है या नहीं, ये रास्ता भारत सरकार ने तय किया। Honorable Minister was the youngest member of the 9th Lok Sabha when I was also a member of Parliament and a minister. Question number 49, Shri S. Niranjan Reddy. With your permission, I ask question 49. Honorable Minister. Laid on the table of the House. Supplementary one. Sir, while the answer correctly notes that urban transport is a part of urban planning, which is a state subject, I would wish to ask the Honorable Minister that the central policy of 2014, after noting this particular point, specifically stated that the central government will contribute its might by providing for a special law separate from Motor Vehicles Act. It would provide for an institutional framework and encourage states to have separate institutional framework, and it will carry out pilot studies in select cities in state governments. Sir, may I ask the Honorable Minister that since 2014, the answer seems to denote that none of this, especially with regard to pilot studies, have been carried out. Does the government intend to do it because they have no policy of bringing a Honorable Minister, it's a pointed question. Pointed question which merits a pointed reply. There is no policy of 2014. This is a state subject. There is a policy of 2006. Supplementary to Honorable Member. May I be permitted to enlighten the Honorable Member? The issue is in 2006. Honorable Minister, but the I have one assumption that senior advocates are normally enlightened. Honorable Member is one. Supplementary two. Sir, the 2006 policy with the revised statement of 2014 suggests a look forward policy for considering urban transport planning rather than look backwards, where they provide solutions retrospectively. With the chairman's permission, may I ask the Honorable Minister that since pilot studies were contemplated to be undertaken for doing this, have such pilot studies, since the answer seems to suggest that they have not been done, would they intend to do so now? Honorable Minister. The 2006 policy, which remains in force, envisages a broad policy framework for management, implementation of sustainable urban transport system in cities. Since the 2006 policy, the central government has introduced the Metro Rail Policy of 2017, Transit-Oriented Development Policy of 2017, and the Value Capture Finance Policy of 2017. Sir, the central government has made an offer that any state government, since this is a state subject, any state government, any government of any union territory wishes to have a study, a feasibility study financed by the central government, we stand ready to do it. Now the urban transport, which is also, let's say, metro, it has come up now from 2002, where it was 0 to 824 kilometers, which is operational, another 1,039 kilometers, which is in work. So it's rapidly expanding. All other statistics I can give.
If the specific question is, has any study been funded, we must receive a demand for a study and we are ready to fund it. Srimati Fozia Khan. Sabhapati Mahoday. On December 8 this year, the World Bank launched a toolkit on enabling gender-responsive urban mobility and public spaces in India, sir, with the aim of suggesting ways to make public transport in Indian cities more inclusive for women traveling requirements. Honorable Minister. Sir, 1 minute, sir. You asked, ma'am, you very pointedly you asked the question. Yeah, let the Honorable Minister but, respond. About this toolkit, I want to know what measures is the government taking to make sure that travel for women becomes more accessible and safe? And gender sensitivity is at the heart of all our urban policies, whether it is urban transport, whether it is any other form of transportation or any other listing. The cart of gender sensitivity lies in the fact that the urban Pradhan Mantri Awas Yojana envisages that the title of the home has to be in the name of the lady of the house or co-jointly. So equally in all other areas we have gender sensitivity. But when the word toolkit is used, she said whether the World Bank toolkit, I get a little worried about the toolkit. World Bank is an international organization. They can prescribe. We have very good thing. So any specifics on what they want on gender sensitivity, I suspect our own plans in our urban transport are way ahead of anything that the World Bank may be recommending. Shrimati Yami Yagnik. I find more advocates are asking questions to the former diplomat, Yami Yagnik. Thank you, sir. Sir, I would like to ask the Honorable Minister, what steps is the government going to take to incentivize state and local governments to electrify urban transport, especially buses and point-to-point modes of urban transport, and encourage people to use public transport system when the public transport share is going down and is going to be 50% till 2030, and private use of private transport is going up. Happy that these questions are asked. Insofar as I'm concerned, I wear another hat, or I should say a turban, which deals with petroleum and natural gas. We are constantly on the lookout for moving from the use of petrol and diesel to electric vehicles, to moving towards green hydrogen, etc. There's a large number of steps we've taken. For instance, I can tell you on biofuels, we have gone from 1.4% of biofuel mixing in 2014 to 10%, which we did 5 months earlier. We had a target of 30%, 20% biofuel mixing. For 2030, we have brought it forward to 24, 25. My oil companies, the OMCs, have set up 22,000 electric vehicle charging stations. And I would like to assure the honourable member, my heart is exactly in the area she has pointed out. All the new rollout of vehicles which are coming in the next year, many of them, most of them will be electric vehicles. Now, what I am doing is only a part of what is being done by the government of India. My colleagues who deals with the Ministry of, NHAI and heavy industries, they are all dealing with this. So there's a plethora, there's a large bouquet of incentives which are there for electric vehicles. I'd be very happy to sit down with the honourable member to share. And keep in mind, the honourable minister has physical hat and figurative hats. Sir, my question is straight away pointed. Sir, in all cities, the urban transport has become very congestive. In almost all the cities, there is no broader roads because the cities are built long ago. So now the question is, you have started metro rail in some of the cities, which is not affordable to the poor people. That is the main concern. So can you make the metro transport affordable to the poor people of all the cities across the country? The member has made a comment and then asked a question. He's entitled Whether to cities are congested or there's been autonomous urbanization which has taken place from rural areas to urban areas is a fact. But it's a state subject, sir. And states will have to devise their own policies. What can we do from the center? As I mentioned, we encourage
public transport, urban transport under different schemes. We encourage the purchase of buses. We encourage the metro system. Metro system by definition is a capital intensive system. Now, the affordability, I agree, there has to be, because metro systems have to be self-sustaining. There are some state governments which would want to make metro system free, which means the metro will become like their state transport undertaking, buses, in other words, collapse. So a judicious balance has to be found, but we are in the part of those who are advocating bringing in more public transport, and that's why we have gone from 0 to 824 kilometers, another 1,039 coming. That in of itself is a testimony to the fact that public transport is being encouraged. We are already, sir, one of the largest metro operators. Very soon we will overtake South Korea, then we'll overtake Japan to become the third largest, and I'm sure by the time comes, we will be the second largest metro operator in the world. Question number 50, Shri Anil Prasad Hegde. States will make it free. States can make it free, like Delhi. Sabapati Mahoday, this is my first star question in this house, sir. First of all, Question, sir? Question number 50. Honorable Minister. Sorry. बदल पर रख दिया गया. Supplementary one. Sir, सभापति महोदय, ये मेरा पहला स्टार क्वेश्चन है इस सदन में. Sir, first of all, I'd like to thank the minister. आपको बधाई देना चाहता हूँ इसलिए कि देश भर में जो खतिन और बुनकर और खादी का संस्था जो है, इसके सही हालत, इन लोगों को खतिन बुनकर का आमदनी क्या है, इसके बारे में आपने सही बात रखा है. और खादी, only that fabric is can be said as khadi, which is hand spun and hand woven. और अगर खतीन और बुनकर नहीं रहेंगे, आगे आपको खादी का कपड़ा ही नहीं मिलेगा. तो आपने जो जवाब में ये बताया है कि खतीन लोगों को एक गुंडी के लिए 7.5 रुपए दिया जाता है, मान्यवर, लेकिन ये एक दिन में खतीन लोगों को सिर्फ 10 से 12 गुंडी ही दिया जाता है. इसके मतलब इन लोगों का न्यूनतम आमदनी 100 रुपए से कम है, और वो भी उन लोगों को साल में 200 दिन भी उन लोगों को काम नहीं मिलता है. यही हालत बुनकर लोगों का. माननीय सदस्य, आप मंत्री महोदय से सीधा प्रश्न पूछिए. मेरे माध्यम से सीधा ये प्रश्न है कि क्या 2022 में MMDA जो है, बिक्री विपणन सहायता, 90% लोगों को, खादी संस्थाओं को और खतीन बुनकर को मिला है या नहीं मिला है? ये ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि जो गुंडी उसे 7.5 रुपए दिया जाता है. ये चूँकि हमारा जो विभाग है उसमें विशेष रूप से हमारे जो कारीगर हैं, जो कारीगर जितना काम करते हैं उन्हें उतना पैसा उन्हें दिया जाता है. और विशेष रूप से ये किसी तरीके से हम लोग इन्हें देखते हैं कि जितनी भी इनकी जो काटते हैं, जितनी ऊनी वो देते हैं, उसी के हिसाब से उन्हें पैसा दिया जाता है. विशेष रूप से आने वाले समय में अभी 7.5 रुपये जो दिया जा रहा है, विशेष रूप से इसमें चिंता की जा रही है कि इनके उन्हीं के पैसे को बढ़ाकर 10 रुपये कर दिए जाए. इस पर ये चिंता की जा रही है, इस पर मीटिंग भी की जा रही है, और शीघ्र ही इसमें इसे पैसे को बढ़ा के ज़्यादा कर दिया जाए. ऑनरेबल मेंबर, सेकंड सप्लीमेंट्री. थैंक यू सर. आपने ये खादी का इस संस्था में KVIC का कोई रोल नहीं है, जैसे कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं है, ये आपने जो बताए हैं. और बात यह है कि खतीन या बुनकर, ये दोनों लोगों को और खादी संस्थाओं को जो MMDA जो मिलना है 2022 में जनवरी से अभी तक मिला नहीं है. इससे जब तक खादी का संस्था जिंदा नहीं रहेगा तब तक खादी स्पिनर और वीवर, खतीन और बुनकर नहीं रहेगा. तो क्या सरकार खतीन लोगों को, बुनकर लोगों को और खादी संस्थाओं को जिंदा रखने के लिए कोई योजना? ऑनरेबल मिनिस्टर. माननीय सभापति महोदय, इन्होंने MMDA की बात की है. विशेष रूप से मैं कह सकता हूं
कि MMDA में हमारे जो बुनकर भाई हैं उन्हें अभी तक उन्हें 30% का MMDA दिया जाता था, अब उसे बढ़ा के 35% कर दिया गया है। और विशेष रूप से उनकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उनके लिए और योजनाओं पर चिंता की जा रही है। और विशेष रूप से हमारे जो वाकई खादी हैं, जो छोटे छोटे हमारे जो कारीगर हैं जो घर पर बैठ के काम करते हैं, उनको पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि किस तरीके से उन्हें किया जा रहा है। और MMDA जो ये बात कर रहे हैं कि जिन्हें नहीं मिला है, विशेष रूप से हर 3 महीने में उसकी समीक्षा होती है और 3 महीने की समीक्षा के बाद MMDA उन संस्थानों को दे दिया जाता है, उन कारीगरों को दिया जाता है जिन कारीगरों के यहाँ से ये सारी चीज़ें बन के आती हैं। श्री शांतनु सेन। Respected Chair, for lending your ears to me. Sir, so far the nationwide... Mike. Respected Chair, thanks a ton for lending your ears to me. So far the nationwide performance of MSME is concerned, our state of West Bengal stands second, sir. But despite this, many a time we are facing many non-cooperation from our government of India. So far the fund is concerned, so far the guidance... Dr. Saab, appointed question to the Honourable Minister. So my question to my learned Minister is, the states which are performing best, why don't you give some special preference or special attention to those states like our state of West Bengal? Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय, इन्होंने अपने राज्य के लिए और की योजनाओं के बारे में बात की है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि MSME पूरे देश भर में काम कर रही है और सबको PMAGP योजना, और अगर कोई यूनिट सिक हो गई है तो उन्हें किसी न किसी तरीके से उन्हें पुनः चालू के लिए ECLGS योजना, ये सारी योजनाएं चल रही हैं और पूरे देश भर में MSME उसका लाभ, जो सब्सिडी है उसका लाभ भी दे रही है, सारी चीज़ें दे रही हैं और आपके यहाँ भी ये योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ वहाँ के लोग ले रहे हैं। श्री अशोक कुमार मित्तल। पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हम बड़े छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं अपने आर्टिजन्स की लाइफ को सुधारने के लिए। 200 रुपया पर डे की हम बात करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या छोटे छोटे 30 से 35% इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ हम बड़े स्टेप्स उठाने जा रहे हैं ताकि उनकी हम लाइफ को इस लेवल पर ला सकें कि बच्चे को 2 वक्त की रोटी खिला सके और स्कूलों में शिक्षा दे सके। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने MSME में जो हम योजनाएं चल रही हैं उन्हें, चूँकि ये उन गरीबों के लिए हैं जिन्हें समय से उन्हें पैसा मिल जाए, उन्हें हमारे लोन भी उन्हें प्राप्त हो जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, और फिर जो कपड़ा काट के वो देते हैं संस्थानों को हम लोग भी MMDA देते हैं। जितना वो काम करते हैं उसमें अभी हम लोगों ने बताया है कि 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है और 35% में संस्थाओं को भी पैसा देते हैं और जो गरीब आदमी हैं उन्हें भी हम लोग पैसा देते हैं जिससे उनकी आय बढ़ सके। श्री A.A. रहीम। Khadi is a symbol of our glorious freedom struggle. So no doubt it is an industry which needs to be protected and nurtured, and only then the welfare of the Khadi weavers and spinners can be ensured. My point is that the imposition of 5% of GST on Khadi clothes and 12% on ready-made Khadi products priced over 1,000 rupees is negatively, badly affecting the Khadi industry. Sir, will the government consider making Khadi clothes and ready-made Khadi products exempt from GST? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, इन्होंने खादी पर GST की बात की है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि खादी पे जो हमारे जो वस्त्र बनते हैं, जो हाथ से बुने जाते हैं, सारी चीज़ें बुनी जाती हैं, उन पर जो GST लगाई जाती है वो एक प्रावधान के अनुसार उसमें लगाई गई है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि खादी जो हमारे गरीब लोग बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए सरकार काम कर रही है। श्री दिग्विजय सिंह। सभापति महोदय, खादी इस देश के सबसे गरीब लोगों को रोजगार देता है और उसमें भी जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, उसमें भी पेमेंट में देरी हो रही है।
मेरे पास ये शिकायत है माननीय सभापति महोदय कि सब खादी की जो परिभाषा है वो साफ है कि उसमें किसी मशीन का उपयोग नहीं होना चाहिए। मेरे पास ऐसी कई शिकायतें आती हैं, विशेषकर एक पश्चिम क्षेत्र के एक प्रांत से, जहां मशीन का उपयोग करके खादी का उत्पादन हो रहा है, जो कि मूल आप जो सोच है खादी के उसके खिलाफ है। क्या ऐसी कोई शिकायत माननीय मंत्री जी के पास आई है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। अगर माननीय सदस्य जी अगर कोई ऐसी चीज करेंगे तो निश्चित इस पर जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 श्रीमती ममता मोहंता। क्वेश्चन नंबर 51। ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल मिनिस्टर। Answer laid on the table of the House. सप्लीमेंट्री 1। धन्यवाद सर। अमरदा रोड एयरस्ट्रिप विकसित करके उत्तर ओडिशा में एक एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार के अभी तक क्या पदक्षेप लिए हैं, इसका एक संपूर्ण विवरण प्रदान करें। और क्या ये जमीन जो कि प्रतिरक्षा विभाग का है, इसको राज्य सरकार का देने का प्रयास किया है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, ये प्रश्न अमरदा एयरस्ट्रिप के विषय में है और यहाँ डिफेंस के साथ हमारी चर्चा हुई है। ज़मीन आवंटित किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को उस ज़मीन के लिए रक्षा मंत्रालय को 26 करोड़ रुपए दिलवाने हैं और उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट का एयरपोर्ट है जिसे स्टेट गवर्नमेंट को ही डेवलप करना होगा। सप्लीमेंट्री 2। सर, ओडिशा में पुरुष विश्व कप हॉकी 2023 जनवरी 13 से शुरू होगा। टूर्नामेंट के मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में रखा जाएगा। मैं मंत्री जी को पूछना चाहती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्तर में खिलाड़ी और दर्शक भारत के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम में एकत्रित होंगे, इसीलिए राउरकेला एयरपोर्ट का विस्तार होना जरूरी है। राउरकेला एयरपोर्ट का काम कब तक खत्म होगा और पैसेंजर के लिए क्या सुविधा किया जाएगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, राउरकेला एयरपोर्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयरपोर्ट है। यहाँ हमारी विचारधारा थी कि इसकी विकास और प्रगति करना अति आवश्यक है। तो सेल और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक मसौदे पर हस्ताक्षर भी हुआ है इस एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैसे भी ATR के डेवलपमेंट के लिए इस एयरपोर्ट पर करीब 28 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नए एप्रन बने हैं राउरकेला एयरपोर्ट में 7 करोड़ का, और ये कार्य मुझे आपको कहते हुए, आपके द्वारा हाउस को कहते हुए खुशी है कि ये कार्य समाप्त हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। यहाँ बाउंड्री वॉल की भी पूर्ण क्रियान्वयन हो चुकी है 2 करोड़ रुपए की। इसी के साथ रीसर्फेसिंग और रनवे का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरीमीटर वॉल 15 दिसंबर तक हो जाएगा और एक्सटेंशन ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग के लिए 6 करोड़ रुपए हमने आवंटित किया है, जो इस 15 दिसंबर 2023 तक समाप्त हो जाएगा। जो माननीय सदस्य महोदय ने कहा, बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल का आयोजन राउरकेला में किया जा रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाने के लिए 2 कदम बहुत जरूरी है। पहला, एक CNS और ANS का हस्ताक्षर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच होना बहुत जरूरी है। मैंने ये निर्देश भी दिए थे दोनों विभागों को कि जल्द बैठकर इस पर हस्ताक्षर हो, और मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए खुशी है कि आज सुबह 10 बजे सेल और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में वो CNS AI एग्रीमेंट के बीच में हस्ताक्षर हो चुका है। दूसरा सर, एक चीज मैं सूचित करना चाहता हूं, अब केवल DGCA का इंस्पेक्शन बाकी है। जो 2B कैपेबिलिटी है इस एयरपोर्ट की, छोटे प्लेन के 2C एयरपोर्ट में परिवर्तित करने के लिए, ताकि ATR वहां लैंड कर पाए, जो आपकी भी इच्छा है। और जो बिड्स उड़ान में दिए गए हैं, अलायंस एयर को ATR भुवनेश्वर और राउरकेला के बीच में, और बिग चार्टर को कोलकाता और राउरकेला के बीच में, वो ट्विन ऑटर छोटा प्लेन है, दोनों को हम लोग क्रियान्वयन करेंगे एक बार जब ये लाइसेंसिंग ATR के लिए DGCA के द्वारा दिया जाएगा। श्री GVL नरसिम्हा राव। थैंक यू चेयरमैन सर।
under UDAN Regional Connectivity Scheme, 28 seaplane routes and 115 helicopter routes have already been sanctioned. I would like to know from the Honorable Minister what is the status of these UDAN operations. And in Visakhapatnam Cruise Terminal also there was a similar proposal for promotion of tourism. I would like to know from the Honorable Minister. Honorable Minister. Sir, what is extremely important in India today, and I would like the indulgence of your office, sir, to inform the House, is that we have very effective international to domestic connectivity. We have very effective domestic tier 1 to maybe tier 2 connectivity. But certainly the concentration has to be on last mile connectivity. And that is very clearly the question that the honorable member has focused on. Because last mile connectivity through civil aviation is very key. That last mile connectivity can only be given by small planes, less than 20 seaters, by seaplanes, and by helicopters. With that in mind, sir, our ministry has tweaked the UDAN scheme. The UDAN scheme used to be for sub-90 seater planes. We have now introduced a new mechanism under UDAN, which is a small aircraft scheme only dedicated to less than 20 seater aircraft. And under that small aircraft scheme, which we have launched in UDAN 4.2, I'm very pleased to inform the House that a total of 132 routes have been awarded, out of which 16 are helicopter routes, 50 are seaplane routes, and only 66 are fixed-wing routes. So many states will get the benefit of last mile connectivity through this UDAN small aircraft scheme, and even across the geography, from Telangana to Lakshadweep, all the way to our hilly states, to the northeastern states, to Assam, we have provided connectivity through these awards that we have given in this latest round of UDAN 4.2. Shri Sukhendu Shekhar Roy. I would request the Honorable Minister to kindly inform this House that House whom the air connectivity between Kolkata, Malda, Balurghat and Kujibihar shall commence. Sir, as I have mentioned before, that the civil aviation sector is a deregulated sector. It is completely incumbent and upon the airlines to choose their route. Certainly through UDAN, we do offer airports that are Alpasevit or Asevit, either underserved or not served airports. The honorable members' party's delegation had come to meet with me. We have also informed the honorable members' party about certain requirements of land in West Bengal. We have also requested if they can lower their ATF on VAT, which 16 states across the country have already lowered, in addition to the 12 states that only had charged between 1 to 4%. So 28 states today charge VAT on ATF of only 1 to 4%, and there are only 8 states left in the country that charge exorbitant VAT on ATF between 20 to 30%. I would urge the member to request his government in West Bengal to lower that rate. If he does, it will certainly lead to a new impulse for greater connectivity into West Bengal and even greater refueling in West Bengal, and greater revenue. Shri Vaiko. Honorable Minister has given a vivid description about the steps being taken for Odisha. I would like to know from the Honorable Minister whether the same yardstick will be applied to my state, Tamil Nadu. Honorable Minister. Of course, sir, without doubt. It is our job, our responsibility to make sure that every state across the length and breadth of India emerges in the area of civil aviation. And I would like to inform the member that in the last 8 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, where we had only 74 airports until 2013-14 in our country, we have added 71 airports, waterdromes and heliports, increasing it to 145, and I commit to the honourable member also that this number will surpass 200 in the next 5 years, increasing air connectivity in our country. And also his airport in Chennai, which is very much a concern for our people in our citizens in Tamil Nadu. That airport in Parandar also we are looking at very aggressively so that we can provide a new greenfield terminal in Chennai as well. And the commitment is through the chair, Shri
Biplab Dev. ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को याद कराना चाहता हूं, जो त्रिपुरा में कैलाश शहर में एक नया एयरपोर्ट के बारे में त्रिपुरा सरकार ने जमीन देने की व्यवस्था की है और आपके दफ्तर से त्रिपुरा सरकार को कम्युनिकेट किया गया है 6 मंथ लगेगी इस जमीन को देखभाल करने के लिए। तो मेरा ही कहना है, जो आपके दफ्तर के माध्यम से कब तक कैलाश शहर की एयरपोर्ट की अनुशंसा की जाएगी और कब तक हो सकती है? धन्यवाद सर। ये प्रश्न उल्टा पे था, मैं निवेदन करूंगा बिप्लब देव जी को, क्योंकि वे बेहद उत्सुक थे पूर्व में भी कि इस एयरपोर्ट का विकास हो। जरूर हम लोग इस क्वेश्चन आवर के बाद मिलें और इस पर विश्लेषण करके हम आगे का रास्ता तय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, श्री दिग्विजय सिंह। Thank you, sir. Question number 52, sir. Honorable Minister. Sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable Member, supplementary one. Sir, my question is very simple. Whether any such complaint has been received by the Karnataka State Grievance Redress and Monitoring System or by the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System? Honorable Minister. The issue of somebody, whether in the state of Karnataka or anywhere else, who's ineligible, being given a house to which he or she does not conform to the criteria, does not arise. We had some case. Let me provide the simple, there is the facts are given. Sir, this is a reference to a CAG report which dealt with the allotments in the period between 2015 and 21. The CAG report dealt with 16... member wants a pointed response. Sir, sometimes you can't ask a question which such as, have you stopped doing so-and-so? Yes and no, both. It has to be an explanation. And if you indulge me for 1 minute, I will explain that to you. A total of 7 lakh homes have been sanctioned in Karnataka, out of which 2,97,000 have been already provided to people. This CAG report deals with a sample size of 16,000. 33 cases were found of duplicity. This is because the duplicity issue came in because the sanctioning authority in Karnataka, which is the Rajiv Gandhi Housing Corporation Limited, said that they did not have, state is informed that the cases referred to in the audit report belongs to initial phase of the mission where feature of duplicity check was not in place in the MIS system. So it is now, when they were discovered, the 33 cases, they were completely removed. Now, we do not do we only receive from the state government and we vet them. There is not a single case where anybody can get an eligibility. We have also tied it to 2018 to Aadhaar. Till 2 p.m. बांग्लादेश के साथ विराटगंज वीरगंज में बन चुका है। आज सबसे एक महत्वपूर्ण भारत और नेपाल के लिए टकरावा है जो लुम्बिनी उस तरफ है
और इस तरफ कपिल वस्तु है सिद्धार्थ नगर, इसको जोड़ने के लिए मैं एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट उस ककरहवा में स्थापित करने की मांग सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।